ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सगन्धगुणात्मवितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता शिवशाखावितं च नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासदेश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीय कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गुरु श्रील प्रभुपाद जय। यस प्रोजी कौन कौन था कल? कार्नल और श्रीला प्रभुपाद। आज हम चेंज कर सकते हैं? हाँ जी प्रोजी। प्रोजी ईशु प्रभु है, अनुष्का माता जी है। ईशु प्रभु अनुष्का माता जी थे ना। ओके, तो कनक माता जी आप बनना चाहेंगे श्रीला प्रभुपाद? नहीं प्रभु जी, मैं कह रहा हूँ कल ये नहीं थे, मतलब नहीं थे। अच्छा, हाँ जी तो प्रभु ईशु जी। प्रभु पढ़ पाएंगे क्या आज? हाँ जी प्रभु जी। ओके, कल प्रभु जी मैंने कार्डिनल था, मैं एज अ मतलब कार्डिनल अच्छा रिप्रेजेंट किया था मैंने जी, और आलोक प्रभु जी ने शीला प्रभुपाद, सॉरी उदित प्रभु जी ने शीला प्रभुपाद का किया था। अच्छा, तो मैं कहता कार्डिनल तो हम कंटिन्यू करते हैं आपके साथ, आप कंटिन्यू कर लीजिए फिर, है ना? जी प्रभु। और शीला प्रभुपाद कौन पढ़ना चाहेगा? कौन नहीं? अनुष्का माता जी आप करना चाहेंगे? हाँ जी प्रभु। ओके, थैंक यू। Okay, let's start. Yes, please. We admit that am I audible? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Yeah. We admit that in the animal there may be the same type of biological existence as in men, but there is no soul. We believe that soul is a human soul. ये किस पॉइंट में बोल रहे हैं, याद है क्या? उदित प्रभु बाइबल का डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा ये उस पॉइंट पे है कि एनिमल में सोल नहीं होती है, ह्यूमन में सोल होती है, उनका वो पॉइंट था। अच्छा, तो इसके लिए कार्डिनल बोल रहे हैं कि बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस तो हो सकती है उनमें, कि भाई मैन भी खा रहा है पी रहा है जो भी है, तो एनिमल भी कर रहा है, तो बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है, बट सोल का कोई चक्कर नहीं है ना, वो कार्डिनल ने बोला। ओके ठीक है, ये अनुष्का माता जी। Our Bhagavad Gita says, Sarva Yonisu. In all species of life, the soul exists. The body is like a suit of clothes. You have black clothes, I am dressed in saffron clothes. But within the dress, you are a human being, and I am also a human being. Similarly, the bodies of different species are just like different types of dress. There are 84 lakh species or dresses, but within each one is a spirit soul, a part and parcel of God. Suppose a man has two sons, not equally meritorious. One may be a supreme court judge, or other may be a common laborer. But the father claims both as his sons. He does not make the distinction that the son who is a judge is very important and the worker son is not that important. And if the judge son says, my dear father, your other son is useless, let me cut him up and eat him, will the father allow this? Certainly not. But the idea that all life is a part of life of God is difficult for us to admit. There is a great difference between human life and animal life. The difference is due to the development of consciousness. In the human body, there is developed consciousness.
Even a tree has a soul, but a tree's consciousness is not very developed. If you cut a tree, it does not resist. Actually, it does resist, but only to a very small degree. There is a scientist named Jagdish Chandra Bose who has made a machine which shows that trees and plants are able to feel pain when they are cut. And we can see directly that when someone comes to kill an animal, it resists, it cries, it makes a horrible sound. So it is a matter of development of consciousness, but the soul is there within all living beings. But metaphysically, the life of man is sacred. Human being thinks on a higher platform than the animal do. What is that higher platform? The animal eats to maintain his body, and you also eat in order to maintain your body. The cow eats grass in the field, and the human being eats meat from a huge slaughterhouse full of modern machines. But just because you have big machines and a ghastly scene, while the animal simply eats grass, this does not mean that you are so advanced that only within your body is there a soul, and that there is not a soul within the body of an animal. That is illogical. We can see that the basic characteristics are the same in the animal and in the human being. But only in human being do we find a metaphysical search for the meaning of the issue. Yes. So yes. So metaphysically, search out why you believe that there is no soul within the animal. That is metaphysics. If you are thinking metaphysically, that's all right. But if you are thinking like an animal, then what is the use of your metaphysical study? Metaphysical means above the physical, or in other words, spiritual. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Sarva Yonisu Kontaya. In every living being, there is a spirit soul. That is metaphysical understanding. Now, either you accept Krishna's teachings as metaphysical, or you will have to take a third class fool's opinion as metaphysical. Which do you accept? But why does God create some animals who eat other animals? There is a fault in the creation, it seems. It is not a fault. God is very kind. If you want to eat animals, then He'll give you full facility. God will give you the body of a tiger in your next life so that you can eat flesh very freely. Why are you maintaining slaughterhouses? I'll give you fangs and claws. Now eat. So the meat eaters are awaiting such punishment. The animal eaters become tigers, wolves, cats, and dogs in the next life to get more facility. No. Yes, so we are moving to the next chapter. एकदम से एंड हो गया ना वो हाँ डिस्कशन? प्रभु जी, मतलब वो ऐसा लगा कि ओके, जैसे कुछ हो सकता है मतलब उसके बाद ना हो, ठीक है, कोई नहीं. ओके, यस प्रभु जी, आप स्टार्ट करेंगे प्रभु जी. practicing yoga in the age of quarrel. Super consciousness. The super soul, being present within everyone, situated everywhere, is conscious of every existence. The theory that the soul and super soul are one is not acceptable because individual soul's consciousness cannot act in super consciousness. This super consciousness can only be achieved by dovetailing individual consciousness with the super consciousness. And this dovetailing process is called surrender or Krishna consciousness. Krishna consciousness is the highest yoga performance by trained, developed devotional yogis. The yoga system, as is stated in the standard yoga practice formula given by Lord Krishna in the Bhagavad Gita, and as recommended in Patanjali Yoga discipline, is different from the nowadays practiced Hatha Yoga, as is generally understood in the Western countries. Yes, Naveen Prabhu ji. Thank you, Vijay. Real yoga practice means to control the senses, and after such control is established, to concentrate the mind on the Narayana, form of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna,
Lord Krishna is the original absolute personality, the Godhead, and all the other Vishnu's form with 4 hands, decorated with conch, lotus, club, and wheel, are plenary expansions of Krishna. Okay. Swati Mataji. In the Bhagavad Gita, it is recommended. In the Bhagavad Gita, it is recommended that we should meditate upon the form of the Lord. For practicing concentration of the mind, one has to sit down in a secluded place, sanctified by a sacred atmosphere, and the yogi should observe the rules and regulations of brahmacharya to live a life of strict self-restraint and celibacy. No one can practice yoga in a congested city, living a life of extravagance, including unrestricted sex, indulgence, and adultery of the tongue. Yes. We have already stated that yoga practice means controlling the senses, and the beginning of controlling the senses to control the tongue. You cannot allow the tongue to take all kinds of forbidden food and drink, and at the same time to improve, and at the same time improve in the practice of yoga. It is a very regrettable fact that many stray, unauthorized so-called yogis now come to the West and exploit the leaning of people towards yoga. Such unauthorized yogis even dare to say publicly that one can indulge in drinking and at the same time practice meditation. Yes, Ashwin Prabhuji. Okay. 5,000 years ago, in the Bhagavad Gita dialogue, Lord Krishna recommended the yoga practice to his disciple Arjun. But Arjun flatly expressed his inability to follow the stringent rules and regulations of yoga. One should be practical in every field of activity. One should not waste his valuable time simply in practicing some gymnastic feats in the name of yoga. Real yoga is to search out the 4-handed super soul within one's heart and to see him perpetually in meditation. Such continued meditation is called samadhi. If, however, one wants to meditate upon something void or impersonal, it will require a very long time to achieve anything by yoga practice. We cannot concentrate our mind on something void or impersonal. Real yoga practice is to fix the mind on the person of 4-handed Narayan who dwells in the heart, in everyone's heart. Yes, Naveen Prabhuji. Sometimes it is said that by meditation, one will understand that God is seated within one's heart always. Even when one does not know it, God is seated within the heart of everyone. Not only is he seated in the heart of the human being, but he is also within the hearts of the cats and dogs. The Bhagavad Gita certifies this with the declaration that Ishvara, the supreme controller of the world, is seated in the heart of everyone. He is present not only in one's heart, but also within the atoms. No place is vacant, no place is without the presence of the Lord. Yes, yes, issue prove. The feature of the Lord by which he is present everywhere is called Paramatma. Atma means the individual soul and Paramatma means the individual super soul. Both Atma and Paramatma are individual persons. The difference between them, however, is that the Atma or soul is present only in one particular place, whereas the Paramatma is present everywhere. Yes, Swati Mataji. In this connection, the example of the sun is very nice. An individual person may be situated in one place, but the sun, even though a specific individual entity, is present over the head of every individual person. In the Bhagavad Gita, this is very nicely explained. Therefore, even though the qualities of all entities, including the Lord, are equal, the super soul is different from the individual soul by quantity of expansion. The Lord or super soul can expand himself into millions of different forms, while the individual soul cannot do so. ये अच्छा एग्जांपल है, जैसे सन का प्रकाश है और सन निकला तो प्रकाश सब जगह फैल गया, उसी तरह जो मतलब लॉर्ड है वो सुपर सोल के माध्यम से
एटम्स के अंदर भी चले जाते हैं, मतलब जीव के अंदर तो जाते जाते हैं बट विद इन एटम भी वो चले जाते हैं। चलो चेक कर रहा हूं। इसीलिए यहाँ से वो बात आती है ना कि जैसे जैसे बोलते हैं कि दीवार में आपने मान लो मुक्का मारा और वापस आपको फोर्स उसका रिएक्शन आता है ना, तो अगर वापस जो शक्ति आई है वो शक्तिवान के माध्यम से ही आ सकती है, शक्ति का अपना कोई अस्तित्व तो है। तो इसका मतलब हर एटम में भी भगवान होते हैं जो एक्शन रिएक्शन के लॉ को एस्टेब्लिश करे हुए हर जगह। करेक्ट ना? यस प्रभु जी। यहाँ से पढ़ के तो ऐसे ही लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार माता जी। The super soul, being seated in everyone's heart, can witness everyone's activities, past, present, and future. In the Upanishads, the super soul is said to be sitting with the individual soul as a friend and witness. As a friend, he is always anxious to get the individual soul back home, back to Godhead. As a witness, he is the endower of all benedictions that result from the individual's actions. The super soul gives the individual soul all facility for achieving whatever he may desire, but he instructs his friend so that he may ultimately give up all other engagements and simply surrender unto God for perpetual bliss and eternal life, full of knowledge. This is the last instruction of the Bhagavad Gita, the most authorized and widely read book on all forms of yoga. Yes, Kanak. The last word of the Bhagavad Gita, as stated above, is the last word in the matter of perfecting the yoga system. It is further stated in the Bhagavad Gita that a person who is always absorbed in Krishna consciousness is the topmost yogi. What is this Krishna consciousness? Just as the individual soul is present by his consciousness throughout the whole body, so the super soul or Paramatma is present throughout the whole creation by his super consciousness. This super consciousness cannot be imitated by the individual soul who has limited awareness. I can understand what is going on within my limited body, but I cannot feel what is going on in another's body. I'm present all over I'm present all over my body by my consciousness, but I'm not present in others' body by my consciousness. However, the super soul of Paramatma, being present within everyone, situated everywhere, is conscious of every existence. The theory that the soul and the super soul are one is not acceptable because the individual soul's consciousness cannot act in super consciousness. This super consciousness can only be achieved by dovetailing individual consciousness with super consciousness, and this dovetailing process is called surrender or Krishna consciousness. एक सेकंड प्रभु जी, थोड़ा पीछे जाएंगे इस पॉइंट को। सरेंडर को क्या बोला प्रभु जी ने, प्रभुपाद ने समझ नहीं पाया थोड़ा। तो सुपर कॉन्शियस कैन ओनली बी अचीव्ड बाय dovetailing individual consciousness with the super consciousness. ओके, ठीक है प्रभु जी। तो मीनिंग ये इसका ये समझे कि एक हमसे जो एडवांस है उसको सरेंडर करना, बट यहाँ पे तो जो है वो सुपर कॉन्शियस तो भगवान का मतलब हो गया यहाँ पे तो सुपर सोल। सुपर सोल मतलब ऐसा है कि जितना मैंने अंडरस्टैंड किया ऐसा है कि जैसे जीव के अंदर तो हो गए इंडिविजुअल सोल हो गई, एक सुपर सोल हो गई। तो इंडिविजुअल जो सोल है उसका भी कॉन्शियसनेस रहता है और जो सुपर सोल है उसका भी कॉन्शियसनेस है, तो उसको सुपर कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो अभी क्या है कि इंडिविजुअल सोल तो पॉल्यूटेड है क्योंकि वो अपने डिजायर्स के माध्यम से गलत गलत काम कर रहा है, बट सुपर कॉन्शियसनेस जो सुपर सोल की है दैट इज एब्सोल्युटली प्योर, दैट इज ट्रांसेंडेंटल। तो जब ये कॉन्शियसनेस जो है वो ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज में एंगेज होगी भगवान की सेवा में, then he will also achieve that transcendental level of super consciousness. That is the dovetailing process. और वो तब होगा जब हम सरेंडर करेंगे obviously भगवान को। यहाँ पे प्रभुपाद ने डायरेक्ट भगवान के लिए बोला है, वही मैं पॉइंट समझने की कोशिश कर रहा था। हाँ अच्छा, ओके, ठीक है। इसमें एक बात और ये है कि जब प्रभुपाद बोल रहे थे कि टॉप मोस्ट योगी, वो टॉप मोस्ट योगी जो है वो है जो कृष्णा कॉन्शियस में लगा हुआ है। जैसे मान लो यशोदा मैया हैं, गोपियां हैं, they are the topmost yogi. They are even bigger yogis
than other yogi that we hear that practice some other yoga system. They are the biggest yogi, gopis, Yashoda Maya, yeah, other devotees of the Lord. They are the topmost yogi. Correct? Ji. Na? Correct. Okay, मेरा turn है क्या? Yes, Prabhuji. Okay. From the teachings of the Bhagavad Gita, we learn very clearly that Arjuna in the beginning did not want to fight with his relatives. But after understanding the Bhagavad Gita, when he dovetailed his consciousness with the super consciousness of Krishna, his consciousness was Krishna consciousness. A person in full consciousness acts by the dictation of Krishna. And so Arjuna agreed to fight the battle of Kurukshetra. ये वो वाला पॉइंट आ गया को सुपर कॉन्शियसनेस वाला. ये सभी को क्लियर हो पा रहा है ना? ऐसा तो नहीं मतलब किसी का डिफरेंट ओपिनियन है और हम लोग ऐसी बात किए जा रहे हैं. तो अब मतलब कोई भी इसमें इंटरफेयर कर सकता है. अगर कुछ डिफरेंस लग रहा है, कोई अपना पॉइंट शेयर करना चाहता है, प्लीज फील फ्री. ओके. Okay. Yes, Naveen Prabhuji. नहीं, इससे ऊपर वाला होगा ना. इसमें एक पे इस पैराग्राफ मिस हो गया. Oh, sorry, bro. Sorry. है ना? Yes, yes. King of Krishna consciousness, this dictation of law of the Lord is received through the transparent medium of the spiritual master. When one is sufficiently trained and acts with the submissive faith and love for Krishna, under the direction of the bona fide spiritual master, the dovetailing process becomes more firm and accurate. At this stage, Krishna dictates from within. From without, the devotee is held by the spiritual master, the bona fide representative of Krishna, and from within, the Lord helps the devotee as Chaitya Guru, being seated within the heart of everyone. मतलब भगवान भी एक गुरु है, चैत्य गुरु है. मतलब इसलिए जीव कोई गलत करता है तो तुरंत उसे थोड़ा सा गिल्ट फीलिंग आता है ना. कहते हैं मुझे बहुत गिल्ट फीलिंग आ रही थी. एक्चुअली चैत्य गुरु के माध्यम से आता है. राधेश्याम पूरे एक लेक्चर बता रहे थे कि जब गलत काम करने पे गिल्ट फीलिंग आना भी बंद हो जाए तो वो ज्यादा डेंजरस हो जाता है. इसका मतलब वो इतना एडिक्टेड हो गया, अब उसे चैत्य गुरु की आवाज भी समझ में नहीं आ रही है, सुनाई नहीं आ रही है. Yes, Prabhuji. Yes, issue 2. Simply to understand that God is seated in everyone's heart is not perfection. One has to be acquainted with God from within and without, and thus act in Krishna consciousness. This is the highest perfection stage for the human form of life, and the topmost stage in all yoga systems. For a perfect yogi, there are 8 kinds of super achievements. First, one can become smaller than an atom. Second, one can become bigger than a mountain. Third, one can become lighter than the air. Fourth, one can become heavier than any metal. Fifth, one can achieve any material effect he likes, create a planet, for example. Sixth, one can control other like the God can. 7, one can freely travel anywhere within or beyond the universe. 8, one can choose his own time and place of death and take rebirth to the stage of प्रभु जी वो आपका ना मतलब वॉइस एकदम मिस हो गया था, तो आप रिपीट कर देंगे प्रभु जी यहाँ से. 8-1, right? Yes, yes, yes. One can choose his own time and place of death and take rebirth wherever he may desire. But one can rise to the perfectional stage of receiving dictation from the Lord. One is above the stage of material achievement above mentioned. Hare Krishna. Yes, Prabhu ji, it's 8:26. So continue करें अभी या फिर? हाँ, लोग सब पूछ सकते हैं, किसी को कुछ पॉइंट डिस्कस करना है या कुछ है तो हम पहले वो पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं. ओके प्रभु जी. एक डाउट था कि इसमें जैसे हमने
पहले पढ़ा था चैत्य गुरु, तो कोई ये भी तो बोल सकता है कि तो ऑलरेडी भगवान मेरे हार्ट में है ही गुरु की फॉर्म में, तो मुझे कोई स्पिरिचुअल मास्टर क्यों बनाना, फिर तो मैं उनकी सुन लूंगा। नहीं तो उसको ऐसे गुरु क्यों बनाना है ना, फिजिकल गुरु। बट फिर वो इंस्ट्रक्शन कैसे हाँ लेगा, प्रॉब्लम कैसे डिस्कस करेगा, क्योंकि चैत्य गुरु के माध्यम से ही उसे वो स्पिरिचुअल मास्टर मिले हैं। मतलब डेफिनेटली जैसे ब्रह्मा जी के, तो अगर देखा जाए तो ब्रह्मा जी के तो लॉर्ड विष्णु ही हुए, चैत्य गुरु भी और वैसे स्पिरिचुअल मास्टर भी, क्योंकि उन्होंने उनके हृदय में वो सारा ज्ञान स्थापित कर दिया था। उनको अलग से कोई स्पिरिचुअल मास्टर तो नहीं करना पड़ा ब्रह्मा जी को। तो ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, बट आई थिंक शायद हमें ब्रह्मा जी के लेवल पे होना पड़ेगा, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। जब तक हम हमारे स्टेज पे, तो शायद ऐसा बोला था कि कृष्णा ही है जो स्पिरिचुअल मास्टर देते हैं, देन स्पिरिचुअल मास्टर ही है जो कृष्णा देते हैं। तो एक तरह से वो चैत्य गुरु ही हैं जो डायरेक्शन दिखाते हैं कि ये स्पिरिचुअल मास्टर होना चाहिए, एंड देन spiritual master through the knowledge of the shastras and his instruction makes us realize and makes us bring us that platform of self-realization where we can take that instruction directly from Chaitya Guru also, which means directly from Krishna also, when we will go back for it. Right? मेरा तो अपना अंडरस्टैंडिंग यही है कि शायद हम अभी उस लेवल पे नहीं है जितना ब्रह्मा जी जैसे एकदम उतने पायस या जो भी है कि डायरेक्ट चैत्य गुरु से इंस्ट्रक्शन ले सके। तो इसलिए चैत्य गुरु की इंस्ट्रक्शन जो अभी जो हम सबका अनुभव है कि जैसे कुछ गलत कर देते हैं तो उस समय जो गिल्ट फीलिंग आती है उस माध्यम से आती है। अब उससे कैसे कम्युनिकेट करेंगी, वो काउंसलिंग का जो काम है वो एक फिजिकल स्तर पे जो गुरु होंगे वही कर पाएंगे। बाकी और डिवोटीज भी शेयर कर सकते हैं, मेरा अंडरस्टैंडिंग है। हम उस प्लेटफॉर्म पे कोई है नहीं कि हम ऐसे चैत्य गुरु एक्सेप्ट करके और आगे बढ़ पाए। या मेरे को जो एक मेंटल स्पेकुलेशन है कि जैसे भगवान हमें डायरेक्शन दे रहे होते हैं वो बात सही है, बट समटाइम ना हम अपने अकॉर्डिंग चीज इंटरप्रेट कर लेते हैं और हम कहते हैं कि वो भगवान के द्वारा हमें निर्देशित है या हमें भगवान से मिला है। तो दैट्स व्हेन सीनियर डिवोटी और इफ यू हैव अ स्पिरिचुअल मास्टर दे कैन गाइड, क्योंकि कई बार वो खुद के मन की इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है या कि हमें कैसे। वो बात सही है, क्योंकि चैत्य गुरु जब कृष्ण है तो उन्होंने तो इंस्ट्रक्शन सारी दे ही दी हैं शास्त्रों में। तो अगर हम लोग इतने एडवांस होते तो शास्त्रों से वो इंस्ट्रक्शन लेके फॉलो कर ही लेते। बट हम लोग बहुत बद्ध जीव हैं, तो हमें एक स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए जो कान पकड़ सके हमारा, बार बार खींच सके, और जो काउंसलिंग के माध्यम से हम उस प्लेटफॉर्म पे ला सके कि हम वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सके। तो जो चैत्य गुरु भगवान कृष्ण दिए हैं शास्त्रों में, तो यस जो नवीन प्रभु का सेम पॉइंट की यस हमें उस स्तर पे लाने के लिए तो चाहिए कोई ना कोई फिजिकल। राइट नवीन प्रभु, यही पॉइंट था ना आपका? हाँ प्रभु जी, आपने अच्छे से उसको एक्चुअली एक्सप्लेन कर दिया और थैंक यू। थैंक यू नवीन प्रभु। आर यू कन्विंस्ड स्वाति? हाँ, मुझे भी लगता है कई बार, मतलब जैसे वो गिल्ट वाली बात आती है, कुछ भी करते हैं कि तो कई बार समझ भी नहीं आता है, हम खुद ही इतना कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं ये तो मन ऐसे ही बोल रहा है बट ऐसा कुछ है नहीं, या तो मेरा माइंड बोल रहा है, तो खुद भी नहीं समझ आता है। एक्चुअली गिल्ट एक अलग फीलिंग रहती है। गिल्ट में आपको पता है कि ये गलत ही है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी का चाकू मार दिया, उसका मर्डर कर दिया, ऐसी वाली फीलिंग आती है एकदम से गिल्ट, नहीं छी 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 क्या कर दिया, वो वाली फीलिंग नहीं है। एक तो मन की बात, जैसे मान लीजिए कि कुछ किसी का छोटा मोटा शरारत कर दी, वो वाली फीलिंग नहीं है ये। उसमें तो मन बदमाशी भी कर सकता है ना हमारे साथ। तो एक फीलिंग रहती है, मतलब उसमें जैसे मान लीजिए बाइक चला रहे हो, किसी को टक्कर मार दिया, वो भड़कता हुआ दूर चला गया, फिर आप उसे छोड़ के ऐसे भाग गए। वो वाली फीलिंग एकदम कि यार वो कुछ कर नहीं पाए, ये हो गया आपको। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा फीलिंग अलग है गिल्ट वाली। और हाँ, फिर वो भी बात है कि भाई मन हो सकता है मन बोल रहा हो कि नहीं तुमने गलत किया, तुम्हें जाके देखना चाहिए था, सही नहीं है ये।
इंटेलिजेंस बोले कि नहीं, अगर मैं जाके देखता इस तरह से टक्कर मार के, तो ऐसे तो भीड़ मुझे सारी मार देती पकड़ के। तो फिर उस समय क्या करना चाहिए, तो एक फिजिकल पर्सन ही समझा सकता है मैं हमको व्हाट इज द राइट थिंग टू डू दैट टाइम, है ना। तो इसलिए फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है गुरु की। जैसे लॉ बुक्स में सारे लॉ लिखे हुए तो हैं, करेक्ट ना। अब हम अगर उनको नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी एक सेंस हमें रहता ही है कि नहीं भाई जनरल लोग तो सब यही फॉलो करें, चलो हम भी कर रहे हैं। बट फिर भी हमें पेरेंट्स चाहिए, पेरेंट्स जो हमें सही से बता सकें कि नहीं ये चीज़ ऐसे करनी है, ये वैसे करनी है। क्योंकि हमारा एक टेंडेंसी है कि हम गलत ही करना चाहते हैं। मन की टेंडेंसी है कि वो नीचे की तरफ ही जाना चाहता है, अगर वैसे मन के हिसाब से भी देखें तो। जैसे रियल लाइफ में भी पेरेंट्स का एक गाइडेंस चाहिए, वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में एक फिजिकल हमें एक व्यक्ति चाहिए जो बता सके कि ठीक है ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, एंड देन you can grow up and then become mature in spiritual life also. Correct ना? हाँ जी। Okay. ठीक है, तो I think time हो ही गया, I think go through. So there is no other question, then we can drop. Okay, Guruji. Okay. So we'll stop. Vancha kalpalvasya kripa sindhya. जय श्री प्रभुपाद की जय जय जय। Thank you. Jai Jai. Thank you for joining everyone. Hare Krishna.